Hello everyone, welcome to Guidely. This is Aditya. Today, on 6th of June 2026, LICHFL written exam has been completed. And what were the questions there in the exam in the section of general awareness? कि GA में क्या questions पूछे गए? Along with the answers, I am going to present here in front of you. So we had total 40 questions. I am able to collect, or my team is actually able to collect 39 questions. तो out of 40, 39 questions मेरे पास हैं. आप बताइएगा out of them which question was there, which was a different way, because based on the student feedback and रिव्यू वी गॉट ऑल दीज क्वेश्चंस. तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आपको फील हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. एंड विच इज द वन क्वेश्चन विच वी मिस्ड वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. ठीक है, चलिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 वाज व्हिच अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024 फॉर द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन. करेक्ट आंसर इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. दैट इज नेशनल साइंस अवार्ड. सो हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. इन 2024 इट वाज स्टार्टेड. सेकंड, which state celebrate its statehood day on 1st of May every year? Correct answer is Maharashtra. India signed free trade agreement with which country in April 2026? Answer was New Zealand. ठीक है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऑल यूके इन सब के बीच में. आंसर इज न्यूजीलैंड. हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग and urban affairs ministry? Correct answer is Mr. Manohar Lal Khattar. अभी in every exam in a recent time they started asking you one cabinet minister. अगर आप चेक करोगे ना, हर एक एग्जाम में रिसेंटली एक ना एक कैबिनेट मिनिस्टर पूछा है. प्राइम मिनिस्टर छोड़कर बाकी पूछते हैं वो. ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए. फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मोस्टली दे डोंट आस्क दीज. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर आस्किंग डिफेंस मिनिस्टर. इनको छोड़कर वो बाकी पूछ रहे हैं जो थोड़े से नॉन फेमस टाइप के डिपार्टमेंट हो रहे हैं इंडिया में उनको. अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, द मिनिमम house design mandate a carpet area. Carpet area means the area which will be available for the living purpose after leaving the wall डायमेंशन एंड ऑल. मतलब दीवारों का जो गैप वगैरह उनको सबको छोड़कर जो रहने का एरिया अंदर होता है ना, उसे बोला जाता है कारपेट एरिया. मिनिमम कारपेट एरिया विच इज नेसेसरी. करेक्ट आंसर है 25 स्क्वायर मीटर. दिस इज मिनिमम. Then which entity is established by the government of India to promote the integrated development of the ports in India? So correct answer is Maritime State Development Council. Correct, yeah answer बन रहा था. Which city is known as the popular city known as the city of waterfalls? Correct answer is Ranchi, Jharkhand. Jewar International Airport located in which city or known as which airport? So Noida International Airport को बोला जाता है Jewar International Airport. Who is the current chairperson of प्रसार भारती? Mr. प्रसून जोशी, very recently appointed. तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन था, सिंपल था. Where is the corporate and registered office of LICHFL is located? Correct answer is मुंबई, महाराष्ट्र. तो इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. How many sustainable development goals are adopted by UN? 17 है. अगर डीप में जाकर पूछता दैट विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन, विच इज रिलेटेड टू पॉवर्टी, डिफिकल्ट हो जाता, बट नंबर पूछा था दैट वाज इजी. Who is the managing director and CEO of LICHFL? So correct answer is Tribhuvan Adhikari sir. Balen Shah is the mayor of which city? कुछ बच्चे बोल रहे थे सर प्राइम मिनिस्टर पूछा है. Balen Shah is the prime minister of which country? मेरी टीम ने बोला कि सर बलेन शाह जो है उनको पूछा है दैट ही इज द मेयर ऑफ विच सिटी. तो मेयर अगर पूछा था काठमांडू नेपाल, कंट्री पूछा था देन ऑब्वियसली नेपाल. ठीक है. Where is the headquarter of FIFA is located? So Zurich, Switzerland. Simple study G के क्वेश्चन था. भारत मंडपम located in which city? New Delhi, India. EPIC, that is electoral photo ID card. I stands for what? So it is identity card. So I was identity. Full form होता है electoral photo identity card. That is called EPIC card. Abhishek Sharma in 2026 IPL season was playing for which team? So Sunrisers Hyderabad. Correct answer था. Author of The Wealth Money Can't Buy was Robin Sharma. अभी recently Robin Sharma न्यूज में भी थे आपके. According to the RBI direction, minimum net own fund requirement for a housing finance company is 20 करोड़. मैंने LICHFL वाले जितने भी वीडियोस थे हाउसिंग फाइनेंस वाले पूरा कवर किया था इन डेप्थ इन डिटेल अबाउट हाउसिंग फाइनेंस, NHB, अबाउट द रूल्स रेगुलेशन फॉलोड बाय द NHB एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. तो ये क्वेश्चन आपका वहां से था फ्रॉम द हसल बैच इटसेल्फ. स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इट वाज डिफरेंट क्वेश्चन. इफ यू आर नॉट कवरिंग HFL properly, housing finance knowledge properly, you can't answer. What was the name of the female mascot unveiled during the census 2027? Answer Pragati. So Pragati and Vikas are the mascot announced by the census commissioner,
as the census for the census population census of 2027. The famous Tantasari received GI tag from which of the following state? West Bengal. How many lighthouse projects were developed under the Global Housing Technology Challenge Fund, that is India? That is answer is 6. Total 6 lighthouse project develop किए गए. Chief Minister of any state take oath in the presence of, तो correct answer is governor. जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर की प्रेजेंस में ओथ लेते हैं एंड अपॉइंटेड बाय आल्सो गवर्नर. एक्चुअली अपॉइंट किए जाते हैं, नॉट ओथ, अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर. अगर ओथ पूछ लेता तो ओथ इन फ्रंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट. दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्लियर कर दूं. अगर पूछा जाता है चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय हुम, आंसर विल बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट. तो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है इनके अपॉइंटमेंट पर, मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है चीफ मिनिस्टर का, दैट इज साइंड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. सिमिलर टू दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. So they are elected as a member of legislative assembly. They are elected as the member of parliament. PM elected as a member of parliament. CM elected as a member of legislative assembly. Then they are appointed by the governor on the position of chief minister or prime minister. Got it? Respective we are talking about. Which country won Uber Cup 2024? They ask you. 2024. Correct answer is China. तो चाइना ने जीता था उबर कप 2024 का. एंड आई डोंट नो व्हाई दे आस्क द क्वेश्चन ऑफ 2024. दे माइट आस्क यू द उबर कप ऑफ 2026. अभी 2026 का जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीता है 2026. आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक फ्रॉम द करंट अफेयर्स दे कुड आस्क यू. तो साउथ अफ्रीका ने जीता था आपका, साउथ कोरिया, सॉरी नॉट अफ्रीका, साउथ कोरिया ने भी आपका जीता था 2026 का. एंड चाइना इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विनर ऑफ उबर कप. एक्चुअली उबर कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन और सबसे ज्यादा जीता है चाइना ने. दैट माइट बी अ रीजन दैट लास्ट टाइम चाइना वॉन इन द ईयर 2024. पीएम आवास योजना 2.0 was launched in which year? So in the year 2024. TNA में भी कवर किया था मैंने. Which of the following are the features of प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0? तो उन्होंने फीचर्स दिए थे. आंसर was all of the above. इन द मास्क आधार हाउ मेनी डिजिट्स आर विजिबल? तो लास्ट 4 डिजिट आपके विजिबल होते हैं. कैनरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? सिंपल क्वेश्चन था. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया कैपिटल इज कैनबेरा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ ओपेक प्लस? तो ओपेक प्लस में आफ्टर द एग्जिट ऑफ यूएई रिसेंटली एग्जिटेड ओपेक. ओपेक को एग्जिट कर लिया यूएई ने. सो देयर वर 12 मेंबर्स इन द ओपेक. ओपेक में टोटल मेंबर्स थे 12. After the exit of UAE, the total number of members in the OPEC are 11. But this was the question related to OPEC plus. OPEC plus are the countries which are non-oil marketing countries as well. जो produce नहीं करती हैं oil, but they are also the part of OPEC. वो भी OPEC plus का part है. ठीक है? So that is called OPEC plus. So OPEC plus alliance have 22 members. That's 2 after the exit of UAE. यहां पर आपका आंसर बन रहा था रशिया इन द गिवन ऑप्शंस. Which portal was developed by the Bombay Stock Exchange to assess the performance of the housing finance companies? So it was an index, BSE Housing Finance Index. BSE Housing Finance Index जो है उसको डेवलप किया है. What is the currency of Germany? Euro. International Women's Day observed on 8th of March. One of the easy question. Housing finance companies in India regulated by RBI. जिन्होंने भी NHB लगा कर आए हैं, that will be a wrong answer. NHB लगाया, आंसर गलत हो जाएगा. In which year NHB was established? 1988 में NHB का फॉर्म हुआ. Which regulatory framework launched by the government of India for the transparency accountability in the real estate sector? That is called RERA. Real Estate Regulatory Authority. For the interview also it is a very important concept. Interview में आपसे रेरा के बारे में पूछा जाएगा. In the interview batch I am going to cover RERA in detail. Which organization releases All India House Price Index on the quarterly basis? So correct answer is Reserve Bank of India. RBI issue करता है that what is the housing prices, how they are going up and down, which city was on the top in term of maximum housing prices in India in particular quarter. तो RBI issue करता है. Which LIC housing finance scheme is designed for the borrower who does not pass income proof or income assessment document? तो correct answer है गृह सुगम होम लोन. ये भी हमने कवर किया था within the hustle batch.
which company has been granted the certification of registration as the housing finance company by RBI and NHB among the given options. The conditions दिए थे that to be a housing finance company, what are the conditions need to be justified, satisfied? तो आंसर था all of the above. Which of the following is the traditional Indian embroidery form? Answer was all of the above. तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, मैंने आंसर्स के साथ बता दिया. LIC HFL junior assistant interview batch is live. Live classes are going to start soon, but housing finance related videos I have already updated in detail, in depth. So if you don't have knowledge about housing finance, but you are going to clear the written examination and going to attend interview, join the batch today itself. Remaining live classes will be based on why you want to join LIC HFL. It's a private company. Why you want to work with a private housing finance company? Why don't you go for the PSBs or public sector insurance company? Why not? These type of questions which are important to be justified. So batch is available on Guidely. You can join it today. If you need the PDF of this particular session, will be available in this Telegram group. You can connect with me in this Telegram group as well. Please like the session, share with your friends so they can also watch the video and get the complete information about these questions. Thank you for joining the session, guys. Take care. Jai Hind. All the very best.